Good morning, students. Today is our second video for biology MCQ quiz. So if you want to actually do the quiz by yourself, you can do it on our website, that is sciencematheeducationplatform.in. So let's start our quiz, today's quiz, and after the quiz we will do the explanation of the questions also. I hope you all are very fine and ready to learn. So let's start the quiz. The first question is, amyloplasts are the type of leucoplast that store carbohydrates. The answer, which organelle is known as suicidal bags in a cell? Lysosome, mitochondria, chloroplast, ribosome. The answer is lysosome. Tonoblast is the single membrane around mitochondria, ribosome, vacuoles, plastids. The answer is vacuoles. Which organelle is the site of protein synthesis? Ribosome, mitochondria, chloroplast, cytoplasm. The answer is ribosome. Fifth question is, nucleus was discovered by Robert Brown, Robert Hooke, both, none. The answer is Robert Brown. Chromatin is stained by acidic dye, basic dye, alkaline one, none. The answer is basic dye. Next question is, who explained that cells are formed from pre-existing one? The answer is Virchow. Next question, light reaction of photosynthesis takes place in which part of chloroplast? Answer is thylakoids. Dark reaction of photosynthesis takes place in which part of chloroplast? Answer is stroma. We will explain it later. The site of respiration in the cell is mitochondria, chloroplast, Golgi body or ribosome. The answer is mitochondria, and after finishing the quiz you will have to click on finish link and you will get your score above. Now let's do the explanation. First question is, amyloplasts are the type of leucoplast that store carbohydrates. So first of all we have to know that what are leucoplasts. We all know that cell, especially plant cell, that is absent in animal cell. Plant cell have plastids in them. Plastid is a cell organelle. There are three types of plastids. First is chloroplast. Chloroplast that has which pigment? Chlorophyll, and helps in photosynthesis. So chloroplast is the site of photosynthesis. The second plastid is chromoplast. Chromoplast have colored pigments in them, like chloroplast have chlorophyll, green pigment, and the other pigments like red, yellow, green, that are stored in chromoplasts. For example, if we see carrot have carotene in them. Carotene name chloroplast that actually store red pink pigment. Likewise, tomato and red chilies have lycopenes. Lycopene, because of which they are red in color. Now the third ones are plastids. These are leucoplast. Leucoplasts are again of three types. Leucoplast actually used to store the food material in the plant cell. Like if they store carbohydrates and starch, they are called amyloplast. Likewise, if they store oils and fats, they are called oleoplast, and if they store protein, they are called eleuroplast. Okay, students, the next question is, which organelle is known as suicidal bags in a cell? Very interesting. Lysosomes. So lysosome is a cell organelle in the cell which has hydrolytic enzyme in them. Hydrolytic enzyme known as acid hydrolase. Enzyme's name is acid hydrolase. There are again different kind of acid hydrolase like lipase, proteases which actually engulf the protein portion, lipids, etc. Acid hydrolase, what they actually do, when any cell organelle
any kind of cell organelle that actually yes, when any kind of cell organelle that actually died inside a cell, then the lysosome, what they do, actually engulf that organelle or any kind of that kind of sort of material that is unnecessary for the cell, and then these hydrolysis enzyme just degenerate that portion, that organelle or that material, and they actually do the cleaning of the cell. So lysosome क्या करते हैं, they engulf एनी डेड मटेरियल, कोई भी डेड ऑर्गेनेली जो होती है उसको क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, फिर हाइड्रोलेज जो होते हैं वो उन पे एक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हमारा सेल जो है वो क्लीन कर रहे। इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, अगर ये हाइड्रोलेज एंजाइम जो हैं वो किसी तरह सेल में चले जाएं, सेल में कब जाएंगे जी, जब लाइजोसोम बर्स्ट हो जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम दे आर वेरी डेंजरस फॉर द सेल, दे एक्चुअली डिस्ट्रॉय द होल सेल, तो दैट्स वाई दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोनोप्लास्ट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स। सेल के जो वैक्यूल होते हैं उनके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बाकी ये तीनों जो ऑर्गेनेलीज हैं, दीज थ्री ऑर्गेनेलीज, दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। Next question is, which organelle is the site of protein synthesis? Ribosome is the right answer. Mitochondria is the site of respiration. Chloroplast is the site of photosynthesis, and cytoplasm is the matrix of the cell. The next question is, nucleus was discovered by Robert Brown, Robert Hooke. So nucleus was discovered by Robert Brown in 1831, and Robert Hooke discovered cell. Actually, he discovered the cell wall of Koch cells, which he has termed as cell. So cell was discovered by Robert Hooke, and Robert Brown discovered the nucleus in 1831. Next question is, chromatin is stained by acidic dye, basic dye, alkaline one or none? The answer is basic dye. But what is chromatin? ये होता क्या है? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें क्या मटेरियल होता है, जिनके ऊपर हमारा डीएनए होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। बट ये अनडिवाइडेड सेल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन डिवाइडेड फेज में क्या होता है, दीज क्रोमैटिन गेट्स कंडेंस्ड, ये क्रोमैटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं डिवीजन के ड्यूरिंग, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं, जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, एट दैट टाइम दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स। सो chromatins are stained by basic dyes, and in the condensed form these are actually chromosomes. So इनको क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस? द आंसर इज वर्चू। वर्चू ने कहा था कि जो सेल हैं वो अपने जैसे ही दूसरे सेल्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट? इसके साथ ही अगला क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज दीज टू आर इंटररिलेटेड। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो बीच वाला मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क फेज के एंजाइम्स होते हैं जो डार्क फेज के लिए ज़रूरी होते हैं, तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं, और इसमें ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम्स होते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसी में होती है, स्ट्रोमा में होती है, तो ये दोनों चीज़ों की साइट है। डन। अब नेक्स्ट क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड, ऐसे इनफोल्ड्स हो जाते हैं, कई बार अंदर की तरफ मुड़ जाती है, और फिर ये
बेसिक मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है और एक लैमिलर स्ट्रक्चर जो है वो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट में आपको ऐसे मिलेगा, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। और कई बार क्या होता है, बीच में ये लैमिलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पाइल्ड हो जाता है। इस पाइल्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेक्वाइड। और इनमें जो रिएक्शन होता है, इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइट फेज के लिए होते हैं। तो लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थैलेक्वाइड्स एंड डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो कहाँ होती हैं, स्ट्रोमा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट वन इज, the site of respiration in the cell is, we all know the answer is mitochondria. I hope you liked today's video, and if you like that, if you like the explanation, please do the quiz by yourself on our website, that is sciencematheeducationplatform.in. आपको यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड मटेरियल भी मिलेगा बायोलॉजी का। इसके साथ साथ अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई है, आप ये वीडियोस डेली देख सकते हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और अगर कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए कि हम आगे लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट में वो चीज़ बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।